Hello, I'm Dr. Pramod Bhor, Director of Orthopaedics at Fortis Hospital, Vashi. Today we'll speak about how long hour flights or regular flights normally affect our bone and joints. So basically, long hour flights में ये समझना ज़रूरी है कि long hour flights में we are sitting at one place, inactivity हो रहा है. So long inactivity and all this is going to affect our bone and joints. How does it affect? Because if you are sitting for a long time with whenever there is inactivity, आप move नहीं कर रहे हो, so definitely तब एक impulse नहीं जा रहा है, एक impact नहीं जा रहा, क्योंकि bone जो आपका bone strength है या bone density है वो धीरे धीरे reduce होगा. बोन डेंसिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी. अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तब जाके कैल्शियम वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, बोन मिनरल फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज़ हाउ आर बोन डेंसिटी इज़ मेंटेन. सो वेन एवर लॉन्ग आवर्स फ्लाइट रहती है तब हमारा बोन डेंसिटी डेफिनेटली धीरे 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 इफ़ेक्ट हो जाता है. दूसरा होता है जॉइंट्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है. अभी अगर मैं कहूँगा लॉन्ग आवर्स में हम लोग एक जगह पे बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली स्टिफनेस बढ़ रहा है, back pains, all the joints are stiff because जो fluid है joint का वो thick हो जाता है, it stops there is lack of mobility. हम इससे wear and tear भी आगे चल के joint का बढ़ता है, तो osteoarthritis थोड़ा सा early हो जाता है. Similarly spine में भी problem आता है because we are sitting for long hours, we are sitting at a with a bad posture, हमारा ठीक तरह से बैठ नहीं पाते, लॉन्ग आवर्स बैठे हैं तो डिस्क पे प्रेशर आ रहा है, एंड दैट कॉजेज मोर इम्पैक्ट ऑन द स्पाइन एंड डिस्क देयर इज मोर चांसेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स एंड ऑल दिस डिजीजेस टू हैपन. नाउ हाउ टू प्रिवेंट. सो प्रिवेंशन में बिफोर द फ्लाइट एंड ड्यूरिंग द फ्लाइट देयर आर सर्टन थिंग्स. सो बिफोर एंड आफ्टर में अगर आप पूछो तो कहेंगे कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया करिए. रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है. इफ़ यू मूव prior and after the flight, stretching of all the joints should be done. Take proper supports. So समझो lumbar support है या neck support है, you should try to use that. If you have long hours flight तो आपको अगर सोना है sitting, choose proper seats with a little bit of leg space. Try to choose an aisle seat where you can move around or take a space. If you are a tall person specifically, आपको तभी ज़्यादा ध्यान देना है इस पर. Now during the flights, basically stay well hydrated, drink lots and lots of water, avoid alcohol or any because this causes some amount of dehydration. Take breaks, try to move around a little bit. Definitely mobility is restricted, so in seat exercises, static exercises are important, just ankle pumps, ankle movements, in place cycling a little bit. All these things should be done. One thing that I have forgotten to mention is DVT, that is deep venous thrombosis. This is basically because you are of the inactivity, blood जो है हमारा move करना बंद हो जाता है, circulation is restricted, and that causes clots in the legs. So specifically legs में ज़्यादा clots होते हैं. So for that not to happen, it is better that we keep on moving, ankle pump exercises and everything. कभी कभार stockings use कर सकते हैं. People with high risk should use stockings to prevent this on the long flight. So take care. Flights are a part of our life. How to prevent is very important. You try to prevent it accordingly. Take care. Thank you.